Hello and welcome. Very good afternoon. You're watching Mirror Now. I'm Afrida Rahman Ali. First up, let's bring you up to speed with the latest situation when it comes to the Yamuna River and its toxicity levels. Not just toxic air, Delhi is also battling toxic water. Quite clearly, with water supply in various parts of Delhi now hit because of the high levels of pollution in the Yamuna River. Yamuna River is the main source of water supply for the entire national capital regions, and high levels of ammonia have been detected in the river water, because of which production of water in two main treatment plants, Sonia Vihar and Bhagirathi, have been curtailed. So what is the response from the Delhi government? The Delhi government claims that the concentration of pollutants has increased because of huge quantity of industrial waste that has been thrown into the Yamuna River from Haryana. Also assures that the problem of water shortage will be solved in the next 24 hours. Discharge of Yamuna water from the upstream by Haryana is one of the most critical sources of water, raw water supply. That raw water has been found to be polluted, and the levels of ammonia, that is the level of pollutants, have shot up in the water discharged by Haryana. The levels have reached 2 ppm and 3 ppm, which is extreme high toxic levels. As a result of which, two big water treatment plants of the Delhi Jal Board, one is the Bhagirathi treatment plant and the other is the Sonia Vihar treatment plant, both of them which have a combined capacity of 250 million gallons per day, had to be shut for a few hours. With active cooperation from Haryana government, officers of Delhi Jal Board of course have been working tirelessly, relentlessly, day and night to restore normal water supply, and I'm happy to report that as we speak, the water treatment plants of Sonia Vihar and Bhagirathi, which were shut completely due to high ammonia in the discharge by Haryana, have been have started functioning. Activity has resumed and they have started functioning at 50% capacity. By evening, this number will go up and they'll start functioning at 100% capacity, and by tomorrow morning, for sure, normal water supply will be restored. And let me make one add one caveat to this, that is, it's not that the entire Delhi is suffering from a shortage of water. Only areas which are supplied water by Sonia Vihar and Bhagirathi water treatment plants happen to be adversely impacted by this, which are largely parts of East Delhi, some parts of Northeast Delhi and South Delhi. Right. Alok is joining me live. Alok, the AAP government in Delhi is one of those parties that had made tall claims on water and electricity, and now for the city to face this kind of shortage because of high pollutants obviously would have left the residents in a state of huge inconvenience. But what is the current status right now? And there is this big promise coming in from Raghav Chadha that everything will be resolved in the next 24 hours. Well, Afrida, yes, hopefully we also in fact believe that the water will be restored. But right now I'm standing in one of the houses in East Delhi, as Raghav Chadha is also telling that the water problem will remain there in this particular area. This is the household, and in fact this lady, she's not having the water since morning. Ma'am, सुबह से पानी नहीं आया, कैसे आपने एडजस्ट किया, क्योंकि और इनफैक्ट रात से ही दिक्कत शुरू हो गई? हाँ जी, कल शाम से ही पानी नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाने के लिए और क्या कहते हैं नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें मतलब बच्चे भी हैं मेरे दो, तो मुझे पानी स्टोर करने के लिए स्टोर करना पड़ रहा है उसके लिए। तो बीच में आया था, जब आया था तब आपने स्टोर कर लिया था, क्योंकि सरकार की तरफ शायद मैसेज थोड़ा बहुत हाँ जी 1 घंटे के लिए आया था बस, फिर थोड़ी मतलब हमने थोड़ा सा पानी स्टोर करके रख लिया है, लेकिन अब आज भी नहीं आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। शायद ये आपका नल है, एक बार हाँ जी, ये देखिए पानी आ ही नहीं रहा है, कल से शाम से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है। और अच्छा सर, ये इधर आप टैंकर वैंकर की भी ज़रूरत पड़ी क्या, कि लोगों ने मंगाया था, क्योंकि हमें पता चला था कुछ लोगों ने टैंकर भी? जी बिल्कुल, एक मैसेज आया था जिसमें मुझे पता चला था कि इस तरीके से दिक्कत आ रही है, तो दिल्ली जल बोर्ड को फ़ोन करके और विधायक हमारे यहाँ के, उनको फ़ोन करके हमने एक टैंकर मंगवाया। तो मैं तो थैंक्स टू दिल्ली सरकार कहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस गर्मी में, तो थोड़ी सर्दी हो रही, उन्होंने नहाने का मौका नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो टैंकर से थोड़ी राहत मिली आपको?
थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन वो भी करके थोड़ी बहुत चले गए। लेकिन लोगों के मैसेज जब आने लगे, क्योंकि यहाँ के लोकल आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो लोगों के मैसेज आ रहे हैं जी अब हमारे यहाँ पर भी अगर इस तरीके से सुविधा हो। और पानी की जरूरत पानी की जरूरत है बिल्कुल। So this is the situation. In fact, if you see Yamuna River, that the pollutants, emitting pollutants, wastes, factory wastes from Haryana, many factories are there. This is not the new problem. This is occurring every year at regular interval also. But as of now, this is unfortunate. What we can say that no permanent solution is coming out, and this kind of water crisis every time Delhi people are facing. Back to you. Okay, thanks for joining us, Alok, and for bringing us voices of the people who are facing this crisis at the moment. As Delhi faces water shortage, residents have also complained of foul smell, in fact, emerging from the water that they were getting. So clearly the issue of polluted water is something that has come into sharp focus, urging the government to find a permanent fix for this recurring problem. Let's also, in fact, therefore, listen into this important some voices that my colleague Priyank gets us on what are the problems they are facing with the water. परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। परेशानी का ये बर्तन देखो कितने सारे पड़े हैं, जबकि हर वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, हर बर्तन की ज़रूरत है, छोटे बड़े की। अब पानी के बिना क्या करें, ना तो बर्तन धोए गए, ना हम नहाए धोए। पानी गंदा आ रहा है, पानी तो पीने को दिल ही नहीं करता, बदबू आती कितनी हद से ज़्यादा। ये आरओ कितने दिन तक चल पाता है आप लोग का इसका फिल्टर जो? 8 लीटर एक दिन चलेगा, बड़ी मुश्किल कर पानी, सिर्फ पानी पिए तो। अगर घर के लिए इसको यूज़ कर तो 2 घंटे भी नहीं चलता। अगर परिवार है, आया गया भी होता है, मेहमान भी आते हैं, घर भी आया गया भी होता है, सब कुछ करना पड़ता है। पानी के बिना सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है, अगर पानी भी इतना गंदा आ रहा है तो क्या करेंगे? अब बाहर से खरीद के पियेंगे, कब तक पियेंगे? क्या करेंगे फिर, हम परचेज कर रहे हैं, आज भी हमने बॉटल लिया है और लेकिन कब तक लेते रहेंगे? तो सॉल्यूशन तो ये गवर्नमेंट को ही निकालना पड़ेगा ना हमारे लिए। We heard voices coming out from across the city where people are facing problem. The only solution for them is to buy water from outside, because these, water purifiers are certainly not enough for every family, looking at the contamination of the pollutants which are there in the water.